बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। और इन द सर्किट शोन इन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इन द सर्किट shown in figure, in the circuit shown in figure, the power dissipated, the power dissipated in 30 ohm, in 30 ohm resistor, in 30 ohm resistor will be maximum if the value of R is, और आपके ऑप्शन रहे ये। सो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है 30 ओम, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 16 ओम, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है 9 ओम, एंड देन वी हैव द ऑप्शन नंबर लास्ट, ये है 0 ohm. So see at what value you will have the maximum power. So we will draw the diagram here. This is V, and then we have parallel combination of resistance. It is 16, it is R, that is variable, and last is 30. Last is 30. This is your load resistance. So this is your figure of the question now. So how we will solve this question now? Again, ये ध्यान रखिएगा, RL जो है यहाँ पर ये है, this is your RL and RL is fixed. जब भी ये ध्यान रखना, RL अगर आपका फिक्स्ड है तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो मिनिमम वैल्यू दे। सो ये हो गया आपका होल RTH, दिस इज RTH, ओके। सो अब चेक कर लीजिए, अगर मैं पहले तो मैं ऑप्शन वाइज सिखा रहा हूं आपको कि और ऐसा ऑप्शन जो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो है वो क्या दे, मिनिमम दे, वो आंसर ऑप्ट करना है। तो वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट चूज करूं, 0 से बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में आंसर, बट लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर बात करें सॉल्यूशन की, सो ऑप्शन ए को अगर चेक करें, अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं तो दोनों पैरेलल में पड़े हुए हैं। सो 30 into 16 डिवाइड बाई 30 plus 16, सो वी विल हैव 30 into 16 डिवाइड बाई 46। तो अगर मैं और डिवाइड करूं इसको, सो 8 2 3, इट इज 8 3 जा 24 upon 23, so it is high value. Let's see. So it is option number A. Let's B. Then we will have 16. So 16 into 16, that is 8. So this is 16 plus 16. That is value is 8. Now C option को check करें, 9 के साथ अगर इसका combination देखें, and 9 into 16 divide by 9 plus 16. तो अगर ये देखें 9 into 16 हो गया, 16 और 9 कितने हो गए आपके, 25 हो गए। और सो अगर ये 25 हो गए हैं तो ये तो फिर काफी वैल्यू आएगी, ये भी ज्यादा आएगी। और लास्ट ऑप्शन और देखते हैं डी। तो डी में अगर देखें 0 into 16 plus 0 plus 16, सो ये आ गया 0। नाउ विच ऑप्शन विल यू गिव द मिनिमम वैल्यू? आई थिंक 0 से मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, सो वी विल ऑप्ट द ऑप्शन नंबर डी। सो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में 0 अवेलेबल नहीं है, अगर 0 अवेलेबल नहीं है
देन आपको ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा किस ऑप्शन में वैल्यू मिनिमम है, और जिस ऑप्शन में अगर मिनिमम वैल्यू आ गई देन वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द एबनॉर्मल केस। सो लेट्स सी। सो अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इन द सर्किट shown in figure, when is the power absorbed by, when is the power absorbed by the 4 ohm resistor will be maximum. Now your options are, R equals to 0 ohm, then we have the next option R is 2 ohm, then C option है आपका R is 4 ohm, and next option जो है आपका वो है R equals to infinite ohm. R is infinite ohm. Okay, so let's see what is the diagram. So first we have 6 volt battery, then 2 ohm, then 4 ohm, then we have again 1 ohm, then we have R ohm. This value is R ohm. So in the circuit shown in figure, when is the power absorbed by the 4 ohm resistor will be maximum. So मैंने आपको बताया है जब भी, और आपका लोड जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट लेट मी मेंशन इट इज योर लोड रेजिस्टेंस RL is 1 ohm. सो लोड रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, और जब लोड रेजिस्टेंस फिक्स होगा तब जो RTH होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। सो मैंने कहा अगर ऑप्शन में आपके पास 0 अवेलेबल है, सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर 0। अगर 0 अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू चूज योर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। सो लेट्स टेक आंसर ए। सो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए इस पर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक पर कि क्या होगा। सो चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन द सर्किट शोन इन फिगर, in the circuit shown in figure, the value of resistance, RS, the value of resistance RS required for maximum power transfer from 10 volt source to 10 volt source to
is given by, is given by. सो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 5 ओम, देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 10 ओम, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा है 0 ओम, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 30 ओम. सो फिगर देख लेते हैं हमारा क्या है. दिस इज योर Vs and Vs value is 10 volt, that is given in the question. Then we have 230 ohm resistance. This is 30. This is also the 30. And next we have again 30. This is also 30. Then we have a load resistance of 10 ohm. क्योंकि ये आपका जो थ्योरी है इसमें मेंशन कराया हुआ है कि 10 volt source to 10 ohm load resistance. And then last we have so RS resistance. So this is your RS, which is variable. So this is about the question. So see the question and please take your time and have the correct answer. So in the circuit shown in figure, the value of resistance RS required for the maximum power transfer from the 10 volt source to 10 ohm load is given by. So मैंने पहले ही कहा था अगर आपके ऑप्शन में 0 अवेलेबल है, so पहली चॉइस जो होगी वो किसकी होगी, 0 की होगी. और इन जनरल अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, कि अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो उसमें 0 ऑप्शन अवेलेबल होगा. अगर क्वेश्चन छोटा आ रहा है तो वहां पर आपको वैल्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखा था. सो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में काफी आ रहे हैं. मैंने अब अगर मैं बात करूं, यह है हमारा जो अब तक हमने पढ़ाया मैक्सिमम पावर थ्योरम की थ्योरी. फिर हमने जनरल केस डिस्कस करा था जहां RL बराबर RT लेना था और RL वेरिएबल था. वहां हमारी मैक्सिमम पावर थी PL मैक्स बराबर VTH स्क्वायर अपन 4RL, एफिशिएंसी थी 50% और ये जनरल केस था. इसके हमने काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं. इसके बाद जो हमने देखा एबनॉर्मल केस, एबनॉर्मल केस में खास बात क्या थी, एबनॉर्मल केस में जो RL फिक्स्ड होता है बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वेरिएबल होता है. तो इसका सबसे बेहतर तरीका है टेक दैट ऑप्शन विच विल गिव यू द RTH मिनिमम. और ये कैसे लेते हैं ये मैंने समझा दिया. और इस केस में खास बात ध्यान क्या रखनी है, जब भी ऐसा केस आएगा तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे RL बराबर RTH, मैक्सिमम पावर और VTH स्क्वायर अपन 4RL और एफिशिएंसी 50%. ये ध्यान रखिए, ये चीजें इसके लिए वैलिड नहीं है. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट केस की तरफ, मैक्सिमम पावर थ्योरम विद AC, क्योंकि जो AC से है यहां से भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं. इसके बाद हमारा एक केस और रह जाएगा मैक्सिमम पावर थ्योरम विद ट्रांसफॉर्मर. वहां से भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी कवर करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम पावर थ्योरम रेंज. सो अभी तक हमने 2 रेंज कवर कर ली हैं. अब दूसरी रेंज के बाद हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम विद AC सर्किट. तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम विद AC. स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल विद मैक्सिमम पावर थ्योरम इन AC. सो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. सो अगर हम बात करें मैक्सिमम पावर थ्योरम विद AC, मैक्सिमम पावर थ्योरम इन AC. सो मैक्सिमम पावर थ्योरम इन AC. तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. क्या वो 2 पार्ट हैं देखते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज अगेन द जनरल केस, अगेन द जनरल केस. तो जनरल केस को पहले समझ लेते हैं क्या होता है. So in AC we have this VTH, then we have the AC impedance, that is, and then we have a load, just load, it is a load, okay. And as we see in the DC, the load is variable. So general case चाहे वो AC का हो चाहे वो DC का हो, जो load होगा वो क्या होगा, variable होगा. So this is your load and it is variable. Now it is RTH and it is JXTH. So this combinedly named as ZTH, that is equals to RTH plus JXTH. Okay.
So this is the representation of AC. Now in a DC we will have proof, but in AC we don't require proof. We will use the derived result, and they are very much sufficient to calculate your numerical problem. So we will see the result. Now for the maximum power theorem, the condition, the first condition is this condition. The condition is ZL is equals to Z is complex conjugate. ZL complex conjugate. Now what is ZTH? So ZTH is your RTH plus JXTH and complex conjugate of that. Now अगर आपने AC के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तब अगर मैं बात करूं, दो तरीके से मैं बात करूंगा यहाँ पर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तब अगर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इट इज RTH माइनस JXTH. So this is your complex conjugate value. Now it is in rectangular form. What form? Rectangular form. Agree? And rectangular form is real and imaginary part आपको given हो, जैसे like RTH is the real part and XTH is the imaginary part. Similarly अगर यही चीज आपको पोलर में दे रखी हो, like ZTH equals to RTH plus JXTH and that have equals to mod of ZTH and angle of phi TH. So if you see the complex conjugate of that, then magnitude remains same. Then complex conjugate अगर लेंगे तो then magnitude remains same, but your angle becomes minus. So this is the meaning of complex conjugate. और ये सारी चीजें हम AC में देखेंगे भी, बट अभी मेरे को ये जरूरत है और आप पढ़ के भी आए हो तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर रेक्टेंगुलर में है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली अगर ये पोलर में है, किसमें है, अगर ये पोलर फॉर्म में है, तो अगर मैं पोलर फॉर्म में बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहेगा। अगर एंगल प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। दैट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इससे थोड़ी बातें और निकाल लेते हैं। नाउ मीनिंग क्या है, अगर आपके जनरल केस में यहाँ RL सर्किट लगा है, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, सपोज योर ZTH इज 3 plus J4, agree, 3 plus J4. So we have the magnitude is 5 and angle, let's confirm the angle. What is the angle of this ZTH? Okay, let's me confirm this value. So it is right, I will just take the angle of tan inverse 4 by 3. So it is tan inverse 4 by 3. So tan 4 divided by 3, it is, so it is, I think, let's just wait, इसको देख लेते हैं बाद में क्या होगा ये। I'm just using 3 plus 4J only. So for maximum power theorem, ZL is equals to ZTH complex conjugate. So your real part remains same and the imaginary part becomes minus। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर आपका जो लोड है वो इस तरीके से, सॉरी जो इम्पीडेंस है वो है Z3 minus J4, then under the maximum power theorem ZL equals to ZTH complex conjugate, then it is 3 plus J4. So this is about the maximum power theorem in AC and this is the general case. So अगर मैं बात करूं जनरल केस की फिर से, तो जनरल केस में अगर आप DC से कंपेयर करें तो DC में क्या था, RL equals to RTH, बट इन AC ZL equals to ZTH complex conjugate। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जो है इमेजिनरी पार्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और अगर ये पोलर फॉर्म में है तो जो एंगल है आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं मैक्सिमम पावर की, तो मैक्सिमम पावर की अगर बात समझ में आती है आपको, सो VTH जो होगा वो होगा आपका Vm sin ओमेगा t की फॉर्म में होगा। अगर मैं इसको सही से लिखूं, देखिए, सो VTH जो होगा वो आपका, अगर AC में बात करूं तो ये होगा VTH इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। सो
अब अगर मैं बात करूं जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो एक्टिव पावर को कंज्यूम करते नहीं है, तो पावर को कंज्यूम करेगा कौन? तो पावर को जो कंज्यूम करेगा ये जो लोड का रियल पार्ट है वही तो कंज्यूम करेगा। सो अगर मैं यहां बात करूं पीएल मैक्स इज इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RL because the reactive element do not consume any active power. It is always taking reactive power. If it is L, then it is consuming Q. If it is C, then it is delivering Q. Agree? Now, in this case, also the efficiency is 50%. Done. So we have similar case as we discussed in the DC. तो DC में मैं दोनों में कंपैरिजन करूं, in DC RL equals to RTH, बट इन AC ZL equals to ZTH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मैंने मीनिंग दोनों जगह समझा दिया है कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दैट इज रियल और इमेजिनरी टर्म में तो इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अगर सिमिलरली मैं बात करूं पोलर में तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, एंगल प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देन द मैक्सिमम पावर वैल्यू इज VTH स्क्वायर अपॉन 4RL and efficiency is 50%. Now we will see the restricted condition. We will see the restricted condition or the abnormal case. So we have restricted condition case now. So restricted condition case. तो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन को मैंने फर्दर डिवाइड कर रखा है कि हम लोग लोड पर जो है लोड को जो है कितनी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा लोड क्या है। सो आपका लोड जो था ZL बराबर था RL प्लस JXL। एग्री? सो लोड इक्वल्स टू RL प्लस JXL। नाउ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इज योर लोड इज ZL, दैट इज RL प्लस JXL, but in that only we are having RL variable. Done. Similarly अगर मैं दूसरी रेस्ट्रिक्शन डालता हूं बट ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसी समय अगर मैं दूसरी कंडीशन डालूं then your ZL is RL plus JXL, but now this time your only XL is variable. Your only XL is variable. In the third case that we will see, that is what? ZL is only RL where the imaginary part is 0. Agree? So we have three cases in the restricted case. So तीनों केस के लिए मैं आपको ड्राइव्ड रिजल्ट दे रहा हूं, क्या होंगे। So रिजल्ट लिख लीजिए आप लोग। तो ये रिजल्ट हैं आपके। So we have the result when your RL is fixed and XL is variable. So at that condition the RL equals to RTH square plus XL plus XTH का whole square। ठीक है यहां तक? Then we have only XL variable, then the answer is XL equals to minus XTH. This is your answer. Similarly for the last case, now last case जो है हम इससे कवर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करें, देखिए इन दोनों केसेस में सिमिलरिटीज क्या है। अगर इन दोनों केसेस की बात करें, इस केस में RL वेरिएबल है, इसमें भी RL वेरिएबल है, बट यहाँ XL प्रेजेंट है, बट यहाँ XL प्रेजेंट नहीं है। तो इसी में हम क्या करते हैं, XL को 0 कर देते हैं। सो योर RL इज इक्वल्स टू RTH स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। Now if you see RTH plus XTH का होल स्क्वायर इज मॉड ZTH, द मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो ये हमारे तीनों केस हो गए और इन तीनों केस के लिए हम बात करते हैं। और कुछ और ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखना चाहूं तो क्या हो सकता है, लेट्स सी। फर्स्ट इफ इज, इसको थोड़ा और मैं कंक्लूड कर लूं, ओनली DC लोड, ओनली DC लोड। एग्री? और कुछ हो सकता है। सो वी विल हैव जस्ट थ्योरी अबाउट दैट, देन वी विल हैव। अच्छा एक चीज मैं और देख लेता हूं, यहां पर ZL बराबर है सपोज RL प्लस JXL एंड बोथ आर वेरिएबल हियर। सो अगर मैं यहां से कंडीशन देखूं तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। सो अगर हम बात करें यहां से, हमने कंडीशन निकाली थी ZL इक्वल्स टू ZTH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड व्हाट इज योर ZL? ZL इक्वल्स टू व्हाट? RL
plus JXL, and that's value is equals to RTH minus JXTH. So if we compare this, then we have RL equals to RTH and your XL is equals to minus XTH. So this is a theory about the maximum power theorem, and one condition that should be mentioned here. So here we have the formula, the PL max equals to VTH square upon 4RL, but for all the remaining cases, we will have the formula like this: P equals to I square RMS into R. So यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा I square RMS, and here the efficiency is not 50%. तो ये चीजें आप ध्यान रखना है कि क्या है और क्या नहीं है. सो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ देखेंगे. इसको एक बार हम साइड में लिख लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि कौन सी कंडीशन कैसी है. सो आई विल जस्ट राइट ऑल दीज थिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड ऑन ए साइड. सो जिससे कि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा ये केस वो वाला केस है, ये केस वो वाला केस है. जो आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दिस थिंग ऑन ब्लैक बोर्ड. So it is the first part is what ZL is equals to ZTH complex conjugate. And second thing is what, if RL is variable, that is RL plus JXL, where only the RL is variable. Then we have what the formula is: RL is equals to RTH का स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर. ठीक है. थर्ड क्या है हमारा, जब लोड जो है RL प्लस JXL तो है ही, बट वेरिएबल क्या है XL, देन XL इज इक्वल्स टू माइनस XTH. ओके. देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी फोर्थ पॉइंट में, ZL is only RL plus JX0. तो ओनली RL अगर वेरिएबल है तब हमारा जो RTH जो RL होगा तब क्या होगा, इट इज RTH स्क्वायर प्लस XTH का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ ZTH. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल इस टॉपिक्स पर. बट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि सारे लोग एक बार फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें और इनको माइंड में रखें, लिंक करके रखें, जिससे कि आपके क्वेश्चन जैसे देखें तो हमें ये पता चल जाए ये उस वाला केस है और आंसर रहा ये. क्योंकि यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन से भी जो है रिजल्ट ड्राइव होके यही आएंगे. आपको फाइनली जो है यही दिमाग में रखने हैं रिजल्ट. ठीक है. तो हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. मैं बाकी सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला न्यूमेरिकल. सो वी विल हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन दैट. So our first numerical on the maximum power theorem is, first हम लोग numerical करेंगे जनरल केस पर, then we will solve numerical on the restricted case. So first numerical है value of the load impedance, ZL for which the load consume maximum power is. Now your options are, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 50 ओम एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीड. देन
The next option is 50 ohm at a power factor of 0.6 लैग 0.6 लैग। सी ऑप्शन जो है आपका वो है 30 ohm at a power factor of unity, and then we have the last option, none of the above। ठीक है यहां तक। और अब हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं कि डायग्राम क्या होगा। सो वी विल हैव द AC voltage। लेट्स चेंज द मार्कर। सो we will have the value 12 angle 30 degree, and then we have ZS जो है वो हमारा है ZS equals to 30 plus J40, then we have ZL, okay। So this is your question। Let's see what happened। Now read करते हैं question। The value of the load impedance ZL for which the load consume the maximum power। Now first thing that should clear in mind, that is your load is variable। ये ध्यान रखना, जब भी जो है restricted case होगा तो वहां चीजें क्लियर रहेंगी। So ये हमारा जनरल केस है, and for the general case if you see ZL is equals to ZTH complex conjugate। ठीक है। So ZS कितना है हमारा 30 minus plus J40 and complex conjugate of that। So if you see the complex conjugate of that, then it is 30 minus J40। But problem ये है हमारे पास ऑप्शन ऐसे अवेलेबल नहीं है। So according to option सेट कर लेते हैं। So if you know the AC थ्योरी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। एग्री? देन और अगर मैं आपको थोड़ी सी और अभी नेक्स्ट बताता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, so it is 25, so it is 50, not 50। okay, so first we will see the value of the load impedance is 50। So the C option is wrong। This is 101% wrong। Now I will tell you more one thing now। What is that? Your ZL is now 30 minus J40। agree? So if you draw the impedance triangle means what? Let's see what is that। R, it is minus JX, it is positive R and it is minus X। so the real part is this। so if you take the X part at minus 90 degree, then it is X and it is your mod Z and this is phi। okay, so we will see the power factor। Power factor is what? Cos phi। so cos phi is what? If you apply the cos theta in this triangle, the cos phi is R by Z, R upon mod Z। so your cos phi is R by Z। now what is your R? R is what? 30, and what is mod Z? Mod Z is 50, so it is 50, 0 से 0 cancel out, so it is 0.6। so I will have the power 50 and mod, this is a mod 50 and the power factor is 0.6। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट ऑप्शन कैसे अवेलेबल है? एक 50 ओम पावर फैक्टर 0.6 लीड का है और एक 50 ओम पावर फैक्टर 0.6 लैग का है। अब अगर आपने थोड़ा सा एसी की थ्योरी याद हो, अगर आपके पास आरसी लोड लगा हुआ है देन योर पावर फैक्टर इज लीडिंग, अगर आपके पास लैगिंग लोड लगा हुआ है देन योर पावर फैक्टर इज लैगिंग। और वो भी कैसे पहचानते हैं वो भी समझ लीजिए आप। नाउ इफ यू Z is R plus JX, then its mod is Z, that is equals to root R square plus X square and it is angle phi। okay, if your Z is R minus JX, then its mod is
r square plus x square, but angle is -5. Now if it is in the form of r plus jx, then power factor is lagging. Power factor is lag. If it is form of r minus jx, then it is power factor is leading. और बाकी ये सारी चीजें जो है हम एसी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि क्या होगा. सो अगर मैं बात करूं अपने क्वेश्चन के आंसर की, तो आंसर हो जाएगा हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 50 है. सो ऑप्शन में 50 दो ही ऑप्शन में अवेलेबल है. एंड पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? 0.6 लीड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लोड है it is RC, because it is RC load. RC load, and for the RC load the power factor is leading, so we will opt the option number B. So option number B is correct. Now moving to the next question related to the maximum power theorem in AC. start करते हैं next numerical हम.